Hello student, next lecture on basic concept of chemistry. These are second lecture from chapter number 1, that is some basic concept of chemistry. In last lecture we discussed about definition of chemistry, nature of chemistry, matter, properties of matter, that is physical and chemical property. Mainly in this chapter you have to discuss physical property, that is mass, length, volume, density, and temperature, etc. Now next topic is law of chemical combination. In law of chemical combinations, the elements combine with each other and form compound. This process is governed by 5 basic laws discovered before the knowledge of molecular formula. Out of these 5 laws, first 3 laws are deleted from our syllabus only for this year, that is 2020-21. That is law of conservation of mass. Second, law of definite proportion. Next one, law of multiple proportion. These 3 laws are simply removed from this year in your syllabus. Only 2 laws that is applicable for this year, that is Gay-Lussac law of gaseous volume and Avogadro's law. Okay. Now first law you have to discuss one by one. यहाँ पे ये जो लॉज है वो आपके एग्ज़ाम के लिए रिड्यूस किया है, बट नॉलेज के लिए ये रिड्यूस नहीं किया है. आप लोग को जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है इसमें से कुछ भी सिलेबस रिड्यूस नहीं किया है. तो हम लोग इन सिंपली इन शॉर्टली डिस्कस वन बाय वन फ्रॉम द लॉज नंबर 1, that is law of conservation of mass. In law of conservation of mass, that is Antoine Lavoisier in 1743 to 1794. यहाँ पे सिंपल एक इमेज दिया है, दिस साइंटिस्ट का नेम दिया है. A French scientist is often referred to as the father of modern chemistry. He carefully performed many combustion experiments, namely burning of phosphorus and mercury, both in the presence of air. Both result in an increase of weight. After several experiments, he found that the weight gain by the phosphorus was exactly same as the weight loss by the air. Then he observed that total mass of reactant is equal to total mass of product. For example, you have to take simple reaction, that is carbon plus oxygen gives carbon dioxide. Here
You have to take one carbon and one oxygen. Then what the value of one carbon is equal to 12 gram its atomic mass, and one oxygen is equal to 16 gram of atomic mass. Here you have to prepare CO2. CO2 means simple, here two oxygen atoms will be taken. Then what the total mass is equal to 32. 12 plus 32 किया, that is equal to 44. तो सिंपल इनिशियल वेट ऑल्सो 44 कंबाइन करके आपको 44 मिलेगा और प्रोडक्ट का वेट भी आपको 44 ही मिलेगा. मीन्स यहाँ पे हम लोग को एक सिंपल कॉन्सेप्ट क्लियर करना है. Hence the law of conservation of mass state that mass can neither be created or nor destroyed. Mass can neither be created or nor destroyed. Okay. Next, second number laws, that is law of definite proportion. Here, what the name will be introduced, law of definite proportion. मीन्स यहाँ पे हम लोग को जो भी कुछ केमिकल रिएक्शन करना है वो फिक्स प्रोपोर्शन में होगा. ये साइंटिस्ट है, ये साइंटिस्ट का नाम है जोसेफ प्रॉड्स. फ्रेंच साइंटिस्ट जोसेफ प्रॉड्स परफॉर्म एक्सपेरिमेंट on two sample of cupric oxide or cupric carbonate. One of the sample was natural and in origin, and the other was a synthetic. उसने क्या किया, एक सैंपल लिया, दो सैंपल लिया, इसमें से एक नेचुरल है और सेकंड वन इज सिंथेटिक. For he found that the composition of element present in it was same for both the sample as shown in table. मीन्स इसका जो composition है आपको नेचुरल में भी सेम मिलेगा और सिंथेटिक में भी सेम ही मिलेगा. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कॉपर, ऑक्सीजन एंड कार्बन. हियर सिंपल एग्जांपल दिया, दैट इज नेचुरल में आपको कॉपर मिलेगा 51.35 परसेंटेज, 9.74 परसेंटेज ऑक्सीजन and 38.91 percentage carbon. Same as you have to performing when synthetic cupric carbonate compound you have to take, at that time also सेम वैल्यूज विल बी ऑब्टेन्ड. मीन्स इसका जो रिजल्ट क्या मिल रहा है हम लोग को, कि जो भी एक कंपाउंड क्रिएट कर रहे हैं, इस कंपाउंड का जो कॉम्बिनेशन प्रोपोर्शन होता है वो एक फिक्स रेशियो में होता है. तो व्हाट दिस रिजल्ट, scientists will be simply state that a given compound always contain exactly the same proportion of element by its weight. Okay. Irrespective of this source, a given compound always contain same element in the proportion. आपको कोई भी एक सोर्स लेना है तो ये सोर्स में आपको कंपाउंड का जो कॉम्बिनेशन वो सेम एलिमेंट का होना चाहिए, तभी आपको ये लॉज एप्लीकेबल रहेगा. द वैलिडिटी ऑफ दिस लॉ हैज़ बीन कन्फर्म बाय वेरियस एक्सपेरिमेंट. साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके इसका जो स्टेटमेंट बनाया है. ओके. दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ डेफिनाइट कंपोजिशन भी बोलते हैं. कभी कभी एमसीक्यू में हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज द लॉ ऑफ डेफिनाइट कंपोजिशन और व्हाट इज द लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन. तो दोनों सेम होता है. ठीक है. दिस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द वन टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स. फॉर एग्जांपल C12, C14, C13, oxygen C16, C18, 17, 18, that type of isotopic compounds will be applicable for the law of definite proportions. Okay. Next continues from next, that is law number 3, law of multiple proportion. In this laws was proposed by John Dalton in 1803.
A simple image you have to introduce, that is the Sir John Dalton is there. In this laws, simple explain is there. It has been observed that two or more elements may form more than one compound. Then law of multiple proportions summarize many experiments on such compound. मीन सिंपल डॉल्टन ने यहाँ पे क्या किया है, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट यू हैव टू टेक्स प्लेस. आफ्टर ऑब्जर्विंग दिस number of experiment, these are one simple statement will be given. The statement is that when two elements A and B form more than one compounds, the mass of elements B that combine with a given mass of A are always in the ratio of small whole numbers. तो सिंपल स्टेटमेंट में आपको ये रिमेमोराइज करना है कि ए और बी दोनों कंपाउंड एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, कंबाइन करके एलिमेंट्स एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं. एट दैट टाइम जो बी वाला होता है वो एक के साथ कंपाउंड करते समय बी क्या करता है, उसका एक स्मॉल होल नंबर रेशियो क्रिएट करता है. ये आपको ध्यान में रखना है. फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन कंबाइंड विथ ऑक्सीजन to form two compounds, namely water and hydrogen peroxide. Here simple reaction is there, hydrogen plus oxygen, it gives water. Number of hydrogen is equal to hydrogen, means simple 2 grams of atomic mass, and oxygen is only one oxygen, then means simple total mass is equal to 16 gram. टोटल कंबाइन करके आपको मिल गया 18 ग्राम्स. नेक्स्ट एग्जांपल है फिर से हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दैट इज H2O2. हियर आल्सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2 ग्राम्स एंड ऑक्सीजन इज डबल, दैट इज 32 ग्राम. 32 प्लस 2 इज इक्वल टू 34 ग्राम. तो यहाँ पे हम लोग को ये एग्जांपल में सिंपल ऑब्जर्व क्या करना है, हाइड्रोजन का जो मास है वो कांस्टेंट है और ऑक्सीजन का मास मीन्स ऑक्सीजन इज बी, हाइड्रोजन इज ए. तो बी का जो मास होता है क्या होता है, वो सिंपल और स्मॉल होल नंबर रेशियो में होता है. तो होल नंबर रेशियो में सिंपल यहाँ पे 16:32. सिंपल डिवाइड किया तो इसको क्या मिलेगा 1:2 इज द सिंपल होल नंबर रेशियो. नेक्स्ट एग्जांपल, हियर इट इज़ लास्ट जो एग्जांपल है इसमें हम लोग सिंपल एक्सप्लेनेशन क्या दिया है. इट इज़ फाउंड दैट two masses of oxygen, that is 32 and 16 and 32, which combine with fixed mass of hydrogen. हाइड्रोजन का कितना दिया है 2 grams, are in the ratio of small whole number, means simple 16:32 is equal to 1:2 ratio will be obtained. Here second example, that is nitrogen and oxygen combine to form two compounds, nitric oxide, and second one is nitrogen dioxide. Simple reaction, that is oxygen nitrogen plus oxygen, it gives nitric oxide. यहाँ पे नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास नंबर होता है दैट इज 14 एंड ऑक्सीजन का 16. दोनों सिंगल सिंगल एटम्स कंबाइन हो रहा है तो दोनों को मिलकर आपको कितना मिलेगा, टोटल 30 ग्राम्स ऑफ एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड. और सेकेंड एग्जांपल में फिर से नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाना है तो नाइट्रोजन से सेम रहेगा, नाइट्रोजन इज इक्वल टू 14 ग्राम एंड ऑक्सीजन इज डबल करके आपको 32 ग्राम लेना है. 32 प्लस 14 इज इक्वल टू 46 ग्राम टोटल. में सिंपल यहाँ पे फिर से आपको बी पार्ट जो आएगा ऑक्सीजन वाला वो 1:2 का रेशियो इंडिकेट करेगा. स्मॉल होल नंबर रेशियो फिर से आपको यहाँ पे मिला 16:32 इज इक्वल टू 1:2 वाला. अदर एग्जांपल ये भी देख सकते हैं आप लोग CO2 और CO.
इसका भी आपको जो मिलेगा ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1:2 रेशियो। ओके, जैसे एज इट इज़ SO2 SO3 ये भी आपको 2:3 का रेशियो मिलेगा एक्सेट्रा। ऑल एग्जाम्पल्स आर एप्लीकेबल फॉर द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, नेक्स्ट वन लॉज नंबर 4। ये जो लॉज दिया है वो आपके सिलेबस से रिड्यूस नहीं किया है, ये आपको एग्ज़ाम में आएगा। तो एग्ज़ाम में क्लास के जो फर्स्ट वाले जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो लॉज दिया है वो आपके एग्ज़ाम से रिड्यूस किया है, फोर्थ एंड फिफ्थ आपको इंट्रोड्यूस किया है। तो फोर्थ वाला है लॉ ऑफ गे-लुसाक लॉज ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ऑल लॉज में आपको एक सिंपल स्ट्रेटेजी रखना है इसका एक्सप्लेन करते समय स्टेटमेंट एन एग्जाम्पल। तो सिंपल दिस लॉज was proposed by Gay-Lussac in 1808। एक स्टेटमेंट दिया है, द लॉ स्टेट दैट when gas combine or produce in a chemical reaction they do so a simple ratio by volume provide all gases are at same temperature and pressure। एक सिंपल स्टेटमेंट ठीक से एक बार ठीक से पढ़ा, when gases combine or are produced in a chemical reaction at that time they do a simple ratio by its volume provide all gases are at the सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। उसका कंडीशन होना चाहिए टेम्परेचर प्रेशर दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर 100 ml of hydrogen combined with 50 ml of oxygen to give 100 ml of water vapor। Simple example, oxygen plus hydrogen, it gives water। Again, you have to take here n number of volumes of hydrogen and volumes of oxygen। 100 ml of hydrogen and 50 ml of oxygen, it gives 100 ml of water। This example will be given here, 2 volume of hydrogen and 1 volume of oxygen gives 2 volume of water or product। So here simple whole number ratio is equal to 2:1:2। Okay, next, thus the volume of oxygen gas and hydrogen gas which combine together, that is 100 ml of hydrogen and 150 ml of oxygen, produce 2 volume of water vapor, which amount is 100 ml, bears a simple ratio, that is 2:1:2। Okay, continues from next page। Second example, in under the same conditions of temperature and pressure, यहाँ पे फिर से temperature pressure same लिया है। 1 liter of nitrogen gas combined with 3 liters of hydrogen gas to produce 2 liters of ammonia। Here also simple example, nitrogen plus hydrogen, it gives ammonia। How much quantity of nitrogen given, that is 1 liter and hydrogen is 3 liter। वॉल्यूम में काउंट किया तो that is 1 volume, that is 3 volume
इट गिव्स 2 वॉल्यूम। यहाँ पे जो रेशियो आएगा दैट इज इक्वल टू 1:3:2, that is simple ratios. Thus, the volume of nitrogen gas and hydrogen gas which combine together, that is 1 liter and 3 liter, it gives 2 liters of ammonia gas. Hence, the simple ratio is equal to 1:3:2. Gay-Lussac discovered of integer ratio in volume relationship is actually law of definite proportion by gaseous volume. Next, that is clause number 5, that is Avogadro's law. In 1811, Avogadro proposed that the simple statement, that is equal volume of gases at the same temperature and pressure contain equal number of molecules. The simple in this statement, when you have to take same temperature and pressure, what the condition is same temperature and pressure, at that time you have to given equal volume of all gases, it gives equal number of molecules. Okay, the simple example, that is if you consider the reaction of hydrogen and oxygen to produce water vapor, that is simple reaction hydrogen plus oxygen, it gives water in gaseous state. When you have to take, that is 100 ml of hydrogen and 50 ml of oxygen, it gives 100 ml of water vapors. Here is hydrogen is 2 volume and oxygen is 1 volume. It combined, it gives 2 volume of waters. In simple, 2 volume gives 2 volumes, but here 1 volume gives 2 volumes. Matlab simple, that is the ratio is equal to 2:1:2. In simple, that is hydrogen is equal to twice n, oxygen is equal to n, and it gives twice n. Means we see that the volume of hydrogen combined with 1 volume of oxygen to gives 2 volume of water vapors without any living unreacted oxygens. According to Avogadro's law, if 1 volume of oxygen contains n molecules, then 2 volumes of hydrogen is combined with n molecules of oxygen to give twice n molecules of water vapors. Hence, the Avogadro explained the above result by considering the molecules to be polyatomic. Okay. Hence, if hydrogen and oxygen were considered as a diatomic, as recognized now, then the above results are easily understood. Okay. Next point, that is Dalton's atomic theory. That is the simple image of Sir Dalton's. In 1808, Dalton published a new system of chemical philosophy in which he proposed the following features, which later become famous as a Dalton's atomic theory. First features, that is matter consists
of tiny individual particles called atoms. Second, all the atoms of a given elements have identical properties including mass, and atoms of different elements has different in mass. Third properties, compounds are formed when atoms of different elements combine in a fixed ratio. And fourth postulate, that is chemical reactions involve only in the recognition of atoms. Atoms are neither be created nor destroyed in a chemical reactions. Dalton's theory could explain all the laws of chemical combination. Okay. Atomic and molecular masses. You know about the terms atoms and molecule. हम सभी लोगों को पता है कि what is the atom, what is molecules. Then in this part, thus it is appropriate here to understand what we means by atomic and molecular masses. यहाँ पे एक्चुअली व्हाट इज द एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस क्या है हम लोग को एक्चुअल में क्या होता है अंडरस्टैंड करना है. फर्स्ट, एटॉमिक मास. इन एटॉमिक मास every element has a characteristic atomic masses. Atomic mass is the mass of an atoms. Atomic mass का होता है that is the actual mass of atoms. It is actually very small quantity. For example, the mass of one hydrogen atom is 1.6736 into 10 raised to minus 24 gram. 1.6736 into 10 raised to minus 24 means simple. These are the very small quantity of weight. This is very small quantity and not easy to measure. In the present system, mass of an atom is determined relative to the mass of carbon 12 atoms. As the standard carbon 12 atom is the standard, and this has been agreed upon in 1961. One of the conference is taken in the France. These SI systems international conference will be decided in 1961. Carbon is the standard atom. In this system, an atom of carbon 12 is assigned a mass of exactly 12.00 gram. Atomic mass unit in AMU, that is atomic mass unit. Next, continues from last slide, the atomic mass and all other atoms of other elements are given a relative atomic mass to the carbon C12. Hence, the atomic masses are expressed in
AMU. Here 1 AMU is defined as a mass exactly equal to 1/12 of the mass of one carbon 12 atoms. A simple equation. Later on, the exact value of atomic mass unit in a grams was experimentally established. That is 1 AMU is equal to 1/12 into mass of one carbon 12 atoms. It gives 1/12 into 1.992684 into 10 raised to minus 23. This 1.992684 is the calculated value. After calculation, it gives 1.66056 into 10 raised to minus 24 gram. Recently, AMU has been replaced by unified mass unit called Daltons. That symbol is U or DA. U means unified mass. Simple above the calculation is 1 MU. 1 MU का वैल्यू कितना आएगा फिर? That is 1.66056 into 10 raised to minus 24 gram. You have to remember it. 1 MU. MU instead of MU हम लोग earlier days क्या यूज करते हैं? That is U. U means unified mass. Okay.